Okay, so welcome to the lecture 2. Uh, Now, today we will start with the topic of op-amp. Last time we stopped at half adder. We'll continue digital circuits later on, but because of the practicals which are going in parallel, I have to start with something called as op-amp today. And our next practical, those who have finished the digital gates, will be based on op-amp. So op-amp stands for operational amplifier of amp. Okay. So it's basically a bi-terminal device, or what you can say, two supply pins and then a three-terminal device. One pin is called non-inverting. You will see why it is called non-inverting. The second pin being inverting terminal. These are the inputs. So it has two inputs and one output. Uh, so basically, there are different kind and configurations of op-amp. Typically, they are found in 8-pin package, but if it is like a dual op-amp, then they are also found in 14 or 16-pin packages. So these devices are usually uses external power source. Now remember, none of the device can amplify on its own. It has to take the supply from outside, so it takes a DC supply from outside, and based on your amplification factor, it can give for 1 millivolt, it can produce with the gain of 100, it can produce 100 millivolts. But at the same time, if your supply is 15 volts and if my input is 1 volt and if I give a gain of 100, it cannot produce 100 volt at its output because your supply was 15 volts minus 15 volt. So let's say even if you do your best, you can get 15 plus minus 15, that is 30 volts output, and plus this 1 volt at the input, you cannot get anything more than 31 volts. So remember this thing. Then we call it, it goes into the saturation at whatever level, maybe 27 volt or something. So remember, this is the basic idea of op-amp. That is, you have a bigger source from the top, you have a smaller input, and based on your smaller input, you produce a larger output. But the actual current is been drawn from that other source, and it is just proportional to your input, and that's why you feel like the signal is getting amplified. Nothing can get amplified on its own. It requires this second source. So that's why all the amplifier comes with something called as saturation limit. So this is a power supply circuit for op-amp. Typical op-amp is powered with 12 volt, 15 volt. This is current configuration is 15 volt, where you can see this one terminal of negative terminal of one supply which is grounded, and that's why we called it as plus VCC. And here the positive terminal of the other 15 volt source is grounded, and that's why we call it minus V. And if you see it on a diagrammatic level, this is how they are connected. Negative supply terminal is connected to minus V, and positive supply terminal is connected to plus V. Now there is something called as VN and VP, where here I have just shown one input. Now this is where it's a single input amplifier, and this is a dual input out amplifier. So DI and SI stands for single input and dual input. Also here the load resistor is connected, whereas here the output terminal is floating. Now, if I give you two batteries, how you will power the op-amp? So let's assume op-amp has this black box, and it has a negative terminal VS, where you have to connect minus 9 volts. So take a battery, connect its negative terminal to this. Then take another battery, connect its positive terminal to this side, and then short negative and positive terminal. There is nothing considered as a ground. So whichever point you choose to be ground is ground. Physically, nothing is grounded. Physically, sometimes you can earth the things. What is earthing? Basically, you take a line and put it inside a physical ground. That is, a wire goes directly physically into your ground, and that is what we called earthing. It's not your ground part. So ground is assumed term. Typically, we assume the negative terminal is at ground, and that's why this battery has positive 9 volt. But it's all relative. Uh, Then and then you have, yeah, Sir, is we the ground necessary for the circuit to work?
So that is what I was telling you. There is nothing, anything such as ground. It's all relative. So as soon as you have a closed circuit with one supply and one resistor, it will work. So if there is a full path of a current to flow, it will work. And you can assume the ground to be here, or you can assume the ground to be here. So ground is just an assumption. For circuit to work, you need a closed path. That's it. And why earthing is given? Because most of the instruments, they carry a very high voltage like 230 volt, and they typically have a metal body. So it might happen that the, let's say, a paint on this metal body goes away, and if you touch this metal body, you might receive a shock if it is not properly earthed. तो अर्थिंग में आपने देखा होगा कि यू हैव दिस 3 पिन प्लग, उसमें एक बड़ा सा ऊपर एक टॉप में ग्राउंड करके लिखा रहता है, एंड देन देयर इज अ लाइव एंड न्यूट्रल. So this is where the earthing is necessary. So never use a pin like 2 pin plug जिसमें ये चीज निकाल दी होती है, because उससे आपको मेटल बॉडी से शॉक आ सकता है. और ये लाइव और न्यूट्रल हमेशा सही ऑर्डर में होना जरूरी है. तो लाइव सिग्नल से जो भी लीकेज होता है, दैट कैन बी गो टू द अर्थिंग, एंड the earthing is also not mandatory like your ground. So ground is not there only, ground is what we assume, but earthing is physically there, and that is not mandatory for your instrument to work. Now let's go back to the But history and sir, yeah. if there is no grounding, won't it damage the instrument? You want to say earthing? Yes, yes, sorry. Yeah, it can damage the instrument also because of the leakage current. So it is always preferred to use a 3 pin plug for any instrument. The reason being, it also covers the third terminal Grounding, of yes, earthing. Yeah. earthing, yes. Okay, Okay. okay. So that's why you will always see, जब आप बड़ा 1 लाख का अगर टीवी लाते हो तो उसमें तो 2 पिन प्लग ही होता है. तो to protect it, we generally advise to put you something called as UPS या फिर stabilizer. ये दो चीजें इसीलिए होती है कि उसको एक्चुअली अर्थिंग होता है, और इसमें जो अर्थिंग का कनेक्शन है वो इसमें कनेक्ट हो जाता है. So that's why if you get a TV is the only like LCD TV, and later on ये एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 पिन प्लग आता है आज भी. अदरवाइज इवन विद योर गीजर एंड फ्रिज यू गेट 3 पिन प्लग्स व्हिच हैज ऑलरेडी अ अर्थिंग. सो सिर्फ टीवी जब भी आप खरीदो, अगर वो बहुत कॉस्टली है, वी विल ऑलवेज रिकमेंड टू यूज आइदर यूपीएस और स्टेबलाइजर बिकॉज अर्थिंग इज देयर. ओके, so let's go to the history and origin of the op-amp. आज जो हम op-amp देख रहे हैं वो ऐसे नहीं बना था. It started with all the way back to the photo tubes. Now there are 2 photo tubes built, and the earlier op-amps were looking like this, a very big tube which has multiple nodes at the base, and then someone transferred it to an integrated circuit consisting of a transistors and a resistor and some tracks, and then they packaged it. So what is the op-amp? Basically, it's a transistor, a resistor and capacitor all goes into a single package. That is what we call a op-amp. Now the op-amp that we see, most popular op-amp is 741. So the most popular op-amp is 741, and it typically has an offset null pin which is not connected most of the times. It also has another offset null on this side which is also called a not connected pin. Then we have actual inverting terminal. We will see what is inverting, not inverting in a minute. Then it has a non-inverting terminal. So remember, 2 for inverting, 3 for non-inverting. So 2I, 3N is how you remember. Now, yeah, the next one is power supply, 4 for minus V in and 7 for plus V in, 6 for output, and 5 is again offset null, which is typically connected to offset the null. Now, what is this offset null? I will explain you. If you don't have any input and still you are getting some output, ideally the output
output should be 0 when there is no input. But because of some imbalances in the circuit, you will start getting some output, and that's why the offset null pins are provided so that you can nullify this input and make it 0. So generally there is some voltage applied across these terminals, and then you make it to 0. It's like your 0 calibration for your op-amp. So not all the op-amps have this offset null pin, but yeah, 741, the popular op-amp, has this offset null pin. And how you apply a voltage? So you connect a resistor between plus and minus VCC. तो यहाँ पे आप 15 वोल्ट पॉजिटिव देते हो, वहाँ पे 15 वोल्ट नेगेटिव देते हो, एंड देन यहाँ से एक वाइपर जो होता है पोटेंशियोमीटर का, दैट यू कनेक्ट टू ऑफसेट नल पिन. Now, what will happen if you keep this wiper at the center? The offset null voltage will be 0, which is the ideal case. इसमें अगर output 0 आ गया तो that is great. पर अगर 0 नहीं आया तो now you can tune this potentiometer. तो अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होते जाएगा और राइट में जाओगे तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होते जाएगा. Now, what is the gain of an op-amp? Gain of the op-amp is typically denoted by a character A, which is generally a integer. What we say, we approximate or round it off to nearest integer. Then Vp and Vn are the two terminal voltages, and if you want to have a single voltage, you can ground one of the terminals, and based on whether you ground your Vn or Vp, you can get output as A times Va, Vp, or minus A times Vn. Now we will see why this. So Vd is the difference voltage, which is typically Vp minus Vn, and that is what we call Vd, and Vo is the gain of the op-amp. So if you ground your Vp, what will happen? It is 0 minus Vn into A, so that's why you get minus A into Vn. Now, what are the basic electrical parameters for the op-amp? तो अभी तक आपको ये समझा होगा कि op-amp कुछ ऐसा एक ट्रायंगल है जिसके आउटपुट पिन पे कुछ वोल्टेज आता है when you apply some signal at its input, और इसका नाम op-amp है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो ये एम्पलीफिकेशन करता है, अभी तक हमने इतना देखा. पर why operational term op-amp is it can do operations such as addition, subtraction, multiplication, division, integration, differentiation, etc. And that's why the term coined as op-amp. So input bias current IB is the average current that flows into an inverting terminal. Then input and output impedance is the impedance that is offered at the input and impedance that is offered at the output. Then open loop gain is the total gain of the op-amp. Then input offset voltage. So input bias current and input offset current. So remember these two terminologies. The voltage must be applied between the two terminals to null the output. So it is the minimum voltage required to null the output. That is, output should be 0. Ideally, input offset voltage should also be 0. Input offset current. This is the algebraic difference between the two currents flowing in inverting and non-inverting terminal. So ideally, if there are no inputs applied, again there should not be any current flow between Vn and Vp, and that's why we say input offset current should also be 0. Now, ideal op-amp. So first we will see. Yeah. How do we use the op-amp to do calculations? We are going to study that, basically how we do addition, subtraction, multiplication, or even integration using op-amp. It's there in the next slides. So at that time, with the circuit, I can explain you better, I guess. So first we will see what are the ideal characteristics of an op-amp. You will never get this op-amp, but we just assume कि काश हमारे पास कोई सुपरमैन होता. Similarly, काश हमारे पास कोई ideal op-amp होता. So let's see what is this gain. Ideal op-amp gain कितनी होनी चाहिए? Infinite. मतलब उसको कुछ भी ना दो तो भी आउटपुट प्रेस कर सके. Like 1.0000 nanovolt का सिग्नल आया तो it should able to produce a very high output voltage. That is what you say ideal gain infinity. मतलब जितनी चाहिए उतनी gain वो दे सकते. Then it's the ratio of V out upon V plus minus V minus.
अब ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की है. तो V plus is same as your VP voltage, which is same as your non-inverting terminal voltage, and V minus is same as your VN voltage, which is same as your inverting voltage terminal. Then input impedance. Now ideal op amp कोई करंट अंदर लेना ही नहीं चाहिए. So input impedance should be infinity. यहाँ अगर ओपन सर्किट है तो कोई करंट अंदर जाएगा ही नहीं. तो इसकी वजह से पीछे जो सेंसर लगा है उस पर लोडिंग नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाई वी नीड इनपुट इम्पीडेंस टू बी इनफाइनाइट. देन इनपुट करंट, एज इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट, इनपुट करंट विल बी ऑब्वियसली जीरो. सो ये एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है. नाउ आउटपुट पे तुमको जितना चाहिए उतना करंट मिलना चाहिए. सो इट इज लाइक, इट शुड बी लाइक अ बैटरी. इफ यू नो आपकी बैटरी जो है वो इनफाइनाइट करंट सोर्स है, और इसलिए वो इतनी डेंजरस भी रहती है क्योंकि अगर आपने इसके अक्रॉस शॉर्ट डाल दिया तो वो जितना करंट चाहिए उतना करंट उसमें से पास करेगी, और करंट पास होता है तो आई स्क्वायर आर टाइम्स हीट भी जनरेट होती है, एंड देयर इज अ चांस ऑफ फायर. एंड इफ यू पुट एक्सप्लोसिव मटेरियल अराउंड दिस, then this battery can be used to trigger the bombs also. So that's why battery is dangerous. Every time whenever you are working with the battery, you have to be safe, because only reason is it has an infinite current source. So I square R times वो करंट बढ़ेगा. Now if you say battery infinite current source है तो आप जो मार्केट से लाते हो 3.7 वोल्ट 37 या 3300 मिली एम्पियर आवर, ये क्या है, इसमें करंट लिमिट क्यों दी गई है? तो इसमें भी करंट लिमिट नहीं होती. इसका मतलब ये होता है कि इफ दिस बैटरी ड्राइव्स 3.3 एम्पियर, the battery will last only for 1 hour. That is what they say by this term. So you remember, whenever you are purchasing any phone or anything, you have to choose a battery which has more mAh rating. मतलब वो उतने मिली एम्पियर खींच के भी 1 घंटा चल सकता है. Typical batteries with your inverter is, if you remember, 18 ampere hour. आपके इन्वर्टर में जो बड़े बड़े बैटरी लगते हैं, उनका रेटिंग होता है 180 to 30 एम्पियर आवर वगैरह वगैरह. सो बेस्ड ऑन दैट वो आपके पूरे घर के लाइट 1 घंटा के लिए वगैरह चला सकते हैं. इतना ज्यादा करंट वो प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द op-amp now, let me just clear all these points. Okay. So next is output impedance. अगर करंट इनफाइनाइट चाहिए तो यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस 0 होना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगा. बैंडविड्थ ऑफ द op-amp. नाउ इफ यू से अगर मेरा इनपुट 1 हर्ट्ज का है, आउटपुट पे 10 वोल्ट आता है, तो इनफाइनाइट बैंडविड्थ मींस अगर मेरा इनपुट 10 किलोहर्ट्ज का हो गया तो भी आउटपुट पे 1 वोल्ट के सिग्नल के लिए 10 वोल्ट ही आना है. प्रैक्टिकल op-amp में ऐसे नहीं होता. इफ यू प्लॉट फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन, देन क्या होता है, आइडियल op-amp में तो ये फ्लैट रहना चाहिए, कोई भी फ्रीक्वेंसी और गेन उतना ही रहना चाहिए. तो प्रैक्टिकल op-amp में ये नीचे चला जाता है. तो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस योर गेन डिक्रीजेस, एंड गेन बैंडविड्थ. सो व्हाट इज द बैंडविड्थ? Bandwidth is a space where the gain becomes half, so that it becomes your bandwidth. So हम लोग क्या बोलते हैं कि op-amp के लिए gain bandwidth product हमेशा सेम रहता है. So let's say if you have 1 lakh gain and a bandwidth of 1 hertz, then if you need 1 megahertz bandwidth, what will be the new gain? Okay, so what I said is gain bandwidth product is always same. So this will be same as 1 lakh into 1 hertz. So 1 megahertz into whatever new gain is there, it's same as 1 lakh. Then you can divide 1 lakh by 1 megahertz and whatever gain you will get. That is the answer. So always remember, gain bandwidth product is always constant. Now temperature dependent. So what is this temperature dependence mean? Ideally op-amp should not depend on temperature. So its gain should not vary with the temperature. But practical op-amp gain also changes with the temperature. Any circuit, if you heat it up, it might not work properly. So whenever you purchase, even if you purchase your phone, उसमें एक operating temperature पीछे का specification में दिया रहता है. Typical range is -55 डिग्री से लेके +80
या 90 डिग्री तक वो काम करते हैं, उसके बाद कोई सर्किट काम नहीं करता. So a military range is I guess -135 to +125. उसके ऊपर फिर भी वो काम नहीं कर सकते. So now you can imagine why your phone stops working when it falls into a hot boiling water or anything, something like that. Now, what is a real op-amp and how you compare it with your ideal op-amp? So differential voltage gain हमने कहा infinity होनी चाहिए. Practically वो 10 to the power 5 to 10 to the power 9 के बीच में होती है. For your op-amp it is almost 1 lakh per 741. Gain bandwidth product in hertz typically infinite होना चाहिए, पर practically होता है 1 to 20 megahertz के बीच में. Again 741 के लिए शायद 5 megahertz है वो. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा बैंडविड्थ 1 मेगाहर्ट्ज है तो आई विल हैव गेन ऑफ 5. गेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए मैंने कहा गेन ऑफ 5. So if you multiply these two, the gain bandwidth product becomes 5 megahertz. If my gain is bandwidth is 1 kilohertz, then my gain becomes 5000. So again 5000 into 1 kilohertz will become 5 megahertz. इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली इंफिनिटी होता है, पर प्रैक्टिकली वो 10 to the power 6 to 10 to the power 12 के बीच में होता है. Generally for 7 for op-amp it is 1 mega ohm, which is very large but not infinite. And then output resistance typically should be 0, but real op-amps में वो 100 ohms से even 1000 ohms के बीच में होता है. For 741 it is around 75 ohms. So this is how you draw a symbol of ideal op-amp. A practical op-amp looks like this with all RINs, RO, the input dependent current gain and so on. Now what's inside this op-amp? Fortunately हमको ज़्यादा डिटेल में इसको सीखना नहीं है, पर उसके अंदर ये सब होता है. If you see on a circuit level आपके लिए बहुत ज़्यादा complex कुछ तो दिख रहा है. So we divide this entire circuitry into 4 stages. One is input stage, second is intermediate stage, third is level shifting stage, and fourth is output stage. This is the inverting input. Next one is non-inverting input. We'll come to that why this is called inverting and why this is called non-inverting. In short, if I want to explain, inverting terminal पे अगर आप इस तरह का साइन वेव दोगे, तो आउटपुट पे आपको एम्पलीफाइड सिग्नल तो मिलेगा, लेकिन ऐसे मिलेगा. मतलब इनपुट का एम्पलीफाइड वर्जन बट आउट ऑफ फेज. तो जब ये पॉजिटिव चल रहा होगा तब ये नेगेटिव चलता है, जब ये नेगेटिव चल रहा होगा तब ये पॉजिटिव चलता है. सो दैट्स व्हाई द टर्म इन्वर्टिंग इनपुट. इनपुट को इन्वर्ट कर देता है. नॉन इन्वर्टिंग इज ऑब्वियसली आपका इनपुट अगर फेज में है तो आउटपुट उसी का एम्पलीफाइड वर्जन इन फेज रहता है. Pardon me for my bad drawings. So if you try to put all these stages inside your op-amp, so your input is basically dual input balanced output, or also short formed as DIBO, and it's a differential amplifier. Differential amplifier का मतलब है वो difference को amplify करता है. Let's say मैंने एक op-amp लिया और यहाँ पे 1 वोल्ट दिया, यहाँ पे 1 वोल्ट दिया, गेन रखा 10 का, तो आउटपुट आएगा 0. ठीक है. Now if I increase both inputs to 3 volt, 3 volt, gain है अभी भी 10 का है, तो भी आउटपुट आएगा 0. So DIBO means आपके एक्चुअल सिग्नल लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 वोल्ट दो या 3 वोल्ट दो, आउटपुट जो है, सॉरी यहाँ भी 0 वोल्ट ही आएगा. आउटपुट जो है, it's not dependent on the input, it only depends on the difference between the input. हाँ, अगर ये 1 वोल्ट है और ये 1.2 वोल्ट है, तो डिफरेंस हो गया 0.2 का, और 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आउटपुट मिलेगा 2 वोल्ट. सिमिलरली ये 3 वोल्ट है और यहाँ 3.2 वोल्ट दिया, तो इनपुट पूरी तरह से चेंज हो गए हैं. 1 का 3 हो गया, 1.2 का 3.2 हो गया, तो भी आउटपुट रहेगा 2 वोल्ट. एंड दैट इज हाउ यू डिफाइन योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर. इट ओनली एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स. Next is intermediate stage, which is dual input unbalanced output. We will see this circuit in detail, and again it's a kind of op-amp only. Next is level shifting stage, emitter follower. So if you remember, आपने शायद BW में पढ़ा होगा कि आपका अगर सिग्नल एक लेवल पे क्लैंप हो जाए,
एंड अगर इसको मैं एम्पलीफाई करते जाऊँ तो ये भी बाद में सैचुरेट हो जाएगा या क्लिपिंग करने लगेगा. So you have to bring this clamp level back to 0 volt. So DC component हटा देना है and सिर्फ AC component maintain करना है. So that is what this emitter follower circuit does. It removes all the DC bias which gets added because of these stages and brings the signal back to original sinusoid. And then finally there is a complementary symmetry or push-pull amplifier that increases the gain in the current and also gives a very high output impedance. Very low output impedance and high current capacity. So we will start with the first circuit. You have a transistor जिसके बेस पे आपने एक सिग्नल दिया, उसका ही एग्जैक्टली सिमेट्रिकल दूसरा ट्रांजिस्टर जिसके बेस पे आपने V2 सिग्नल दिया. तो दोनों ट्रांजिस्टर अगर आइडेंटिकल है तो उनकी गेन सेम होगी. व्हाटएवर गेन इज देयर 125, इसकी भी 125 होगी. तो दो आइडियल ट्रांजिस्टर लिए which are very similar. दोनों के एमिटर शॉर्ट करके टू अ रेजिस्टर it's given to minus VEE. ओके, नाउ ड्यूअल इनपुट तो हो गया क्योंकि इसके बेस पे एक इनपुट है और इसके बेस पे दूसरा इनपुट है. नाउ हाउ ड्यूअल आउटपुट इज टेकन अप. सो एक रजिस्टर VCC से दो अलग रजिस्टर से सप्लाई देते हैं ताकि ड्यूअल आउटपुट आप निकाल सको. एंड देन यू कनेक्ट अ VO एट दिस पॉइंट. नाउ इफ यू रिमेंबर योर PWE, अगर आप ट्रांजिस्टर को इनपुट सप्लाई देते हो और कलेक्टर से कलेक्ट करते हो तो ट्रांजिस्टर की गेन टाइम्स वो एम्पलीफाई होता है और इन्वर्ट होके मिलता है. करेक्ट. तो अब यहाँ जो भी सिग्नल है वो इन्वर्ट होके यहाँ से कलेक्ट होगा. सो VOE1 और VOE2 में से कौन सा टर्मिनल आप ग्राउंड पकड़ते हो उसके ऊपर आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा है और नॉन इन्वर्टिंग कौन सा है वो डिसाइड होता है. क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रांजिस्टर जो है वो उसके बेस पे आए हुए सिग्नल को बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दे देता है और इन्वर्ट कर देता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल DIBO. एंड अनबैलेंस में क्या करते हैं, सेम सर्किट है, सर्किट में कोई चेंज नहीं है, ओनली चेंज इज हाउ यू कलेक्ट आउटपुट. सो आउटपुट दिस टाइम कलेक्टेड बिटवीन ओनली वन आउटपुट, एनी वन ऑफ देम एंड द ग्राउंड. इसके बीच में जब आउटपुट मेजर करते हो तो दैट बिकम्स योर DI, ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट. ओके. नाउ अगर सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट सर्किट ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा, आपको एक टर्मिनल को ग्राउंड करना होगा और एक ही टर्मिनल को इनपुट देना होगा. सो दैट बिकम्स योर SIPO. ओके. एंड इफ आई वांट टू generate a single input unbalanced output SIUO, then I will ground one of these terminals and then it becomes my SIU, either of these. Okay. Now what happens, यहाँ पे common collector है तो current in collector gets added और यहाँ पे 2 times I current flow होता है, whereas collector current is separate which is IC1 and IC2. Now this next circuit is for emitter follower. यहाँ पे आप इनपुट देते हो, फिर एमिटर पे एक वोल्टेज डिवाइडर बायस लगाते हो और उसको माइनस V के साथ जोड़ते हो. सो आप ये पॉइंट पे हमेशा 0 वोल्ट DC एक्सपेक्ट करोगे because the value of R1 and R2 are tuned such that if you know, if I give any voltage here, let's say it is V volts, then the output at this point सिंपल वोल्टेज डिवाइडर बायस लगाऊंगा और दूसरे टर्मिनल पे ग्राउंड होता. तो ये VCC अगर है और दोनों रजिस्टर वैल्यू सेम है तो यहाँ पे VCC इंटू म्यूचुअल R which is R upon addition of these two which is 2R. तो RR कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा VCC by 2. अभी इस केस में क्या है, यहाँ पे V वोल्ट है जो कि इनपुट का एम्पलीफाइड वर्जन है एंड माइनस VE है. तो अभी यहाँ पे माइनस VE है तो अभी टोटल वोल्टेज VCC नहीं है, इट्स VCC माइनस माइनस ऑफ माइनस VE.
बराबर है, तो ये 2 बार माइनस लगने की वजह से VCC प्लस VE हो जाता है, ठीक है, एंड देन अपॉन R2 which is the down resistance upon R1 plus R2. So now you can just control the voltage levels R1 and R2. You can control the output voltage. So this is how a DC output voltage is controlled. What happens to the AC? AC also get voltage divided, but because of this minus V being the DC supply for AC, we assume it to be 0. Then the final state of op-amp is what we call this is the emitter follower and what we call it Darlington pair, where output of one is coupled to the next one, and then this is a complementary symmetry push-pull amplifier. इसमें एक ट्रांजिस्टर PNP होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर NPN होता है. So if you see a very short circuit of op-amp, it should look like this. This was the first op-amp which was built with only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transistors and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resistors. तो अगर आपके पास 8 ट्रांजिस्टर और 9 रजिस्टर है, you can build your own op-amp. Now you can imagine it's not fixed कितने ट्रांजिस्टर यूज करने हैं, कितने ट्रांजिस्टर और कितने रेजिस्टर्स यूज करने हैं. So each op-amp will have its own configuration which is given in its datasheet. Now all op-amps can be represented by a single standard formula VO equal to K times V plus minus V minus. Okay, where K is the gain and which is the most important property of an op-amp. The gain should be distinct for a gain of op-amp circuit. So AB इसको हम बोलेंगे तो V out upon V in. कोई भी gain को हम वैसे ही define करते हैं V out upon V in. Now potential source of confusion comes by distinguishing between op-amp circuit and op-amp. So this is what we call the op-amp circuit, where you connect the circuit outside along with the op-amp as a symbol in it. ठीक है, तो op-amp के अंदर का सर्किट हर बार ड्रॉ नहीं करते, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है एक ट्रायंगल से. तो लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट. Sir, in using op-amp in a circuit, आपने resistor क्यों use किया? Because when we are using an op-amp, there is internal resistance ना to the voltage. कहाँ पे? यहाँ पे ये नहीं वाला? नहीं, जो op-amp circuit था ना the next stage. इसके अंदर ये वाले? हाँ, in op-amp there is already resistors ना, तो why are you using resistor in the circuit diagram for op-amp? तो on the next page, that op-amp circuit जो था ना. एक मिनट, ये वाले? हाँ या ये R1 and Ri and Rf आपने ये क्यों यूज किया है? Because internally inside on op-amp there is already some resistance ना. Correct, correct. So that is what I am going to explain now. So first thing is op-amp का गेन कितना है? 1 लाख. हाँ, अब आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट दोगे और उसको 1 लाख से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आउटपुट तो हमेशा सैचुरेशन में जाएगा. यू विल नेवर गेट आउटपुट ऑफ op-amp. Correct. So you need a control mechanism to reduce down this gain. Now one way to reduce down this gain is connect a feedback resistor called Rm and the input resistance called Ri. Okay. Now this is the first operation of op-amp where signal is inverted with particular gain. So how this inversion is done we will see now. Now this is your ideal op-amp जिसमें अंदर ही रेजिस्टर और ट्रांजिस्टर सब कुछ है. उसके अलावा मैंने बाहर से एक RF लगा लिया जो है आउटपुट VO टर्मिनल और ये VX टर्मिनल के बीच में. ठीक है, तो नाउ कैन आई से द करंट फ्लोइंग बिटवीन दिस टर्मिनल्स इज VO माइनस VX अपॉन RF ओम्स लॉ की वजह से इज इक्वल टू IR. ठीक है, एंड दिस इज योर Vin. So current coming to this terminal is Vin minus Vx upon Rin. Okay. So now if you try to equate these two currents, why we want to equate these two currents? Because internal resistance of op-amp is very high. So we assume there is a negligible current flowing inside. Correct? So if you equate these two currents, the first current, incoming current, okay, both cannot be same. So I have to put a minus sign.
So incoming current is same as outgoing current. So if I write first current as V in minus Vx upon R in, that is my incoming current. Okay. Let me clear the drawings so that it is easily understandable. So this is the incoming current. We will call it I in. Okay. So that is nothing but V in minus Vx upon R in. It's same as outgoing current, which is nothing but same as Vx minus Vo upon Rm. Okay. And now if you try to simplify these two equations, there is one more term we know, that Vx is virtually ground. Now what is this virtually ground? Since I know my positive terminal is grounded and there is no current flow between positive and negative terminal because of the high impedance, the potential between this point and this point has to be same. क्यों? क्योंकि करंट फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करेक्ट? और अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वी assume these two voltages are at the same level. That's why your V in becomes same as V2. So अगर ये टर्मिनल ग्राउंड कर दिया तो ये टर्मिनल भी वर्चुअली ग्राउंड हो जाता है. अगर इस टर्मिनल पे मैंने 1 वोल्ट दिया होता तो इस टर्मिनल पे भी वर्चुअली 1 वोल्ट आ जाता, क्योंकि करंट जीरो है. करंट जीरो है तो बोथ पॉइंट्स आर एट द सेम level, and that's why we will say your Vx is 0. So now if you equate and try to solve, you will get the equation V in minus 0 upon R in is same as 0 minus V out upon Rn. And then if you try to simplify, you will get a ratio of V in by Vo, which is a gain, which is Rf by Rn. So just by connecting these two resistors, now I can control the gain of the op amp. ठीक है. अब मैं Rf का वैल्यू अगर 0 कर दूं और Ri अगर इंफिनिटी कर दूं तो यहाँ पे मेरा गेन हो जाएगा 0. अगर Rf और Ri सेम कर दूं तो मेरा गेन हो जाएगा -1. तो ये मेरा पहला ऑपरेशन है, V in equal to minus V out, which is a mathematical operation, करेक्ट? और इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को कहते हैं निगेशन और इन्वर्जन. ठीक है. जो भी इनपुट होगा उसका नेगेटिव आउटपुट पे आ जाएगा. And this is the concept of a virtual ground. Because of one terminal being grounded, you can assume the entire op amp is parallel to resistor Rf, correct? And there is no current flowing between them, these two. So that's why your V2 becomes 0. Now this is the gain. So now we will try to solve one sum, and I guess I have to stop this lecture at this point. We will try to solve this sum. So let's say if my Rin is 10 kilo and Rf is 100 kilo, okay? And if I ask you to find a gain, अगर यहाँ पे मैंने 1 मिलीवोल्ट दिया है तो आउटपुट कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है. अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हाउ यू विल सॉल्व इट? ठीक से देखना. Rf की वैल्यू दी है 100 की, ठीक है. Rin की वैल्यू दी है 10 की. I don't want you to derive. You want to remember this. Minus Rf by Rin is the gain of a non-inverting concentrator. तो यहाँ पे क्या होगा? इनपुट जो है वो माइनस Rf की वैल्यू कितनी है? 100 k टाइम्स, और Rin की वैल्यू है 10 की. तो ये k कैंसिल हो जाएगा एंड गेन ऑफ -10. ठीक है. तो आउटपुट कितना आना चाहिए? -10 into 1 millivolt, which is -10 millivolt. ठीक है. That is your final answer. Clear with this? Now remember, we want to reduce the gain. इसलिए हमेशा हमारे आउटपुट से टर्मिनल पे नेगेटिव फीडबैक जाता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको जोड़ दिया जाता है. नेगेटिव फीडबैक always reduces the gain. Now there are lot of concept behind negative feedback, but आप एक बात को समझो कि अगर आपका गेन ऐसे पॉजिटिव चल रहा है, उसमें आप एक इस तरह का छोटा सा नेगेटिव सिग्नल ऐड कर दो, क्या होगा? ओवरऑल तुम्हारा आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, ना कि फेज चेंज करेगा, करेक्ट? Because of the additive point nature of the both signals. This is what we call the negative feedback. So you add a portion of a output back to itself to reduce the gain.
और ये पोर्शन ऑफ द आउटपुट क्यों कह रहा हूँ मैं, इफ यू लुक एट दैट क्लोजली, अगर इनपुट कुछ नहीं है और ये आउटपुट है तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर बायस बन जाता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आना है वो इससे कंट्रोल हो जाएगा इन दो रजिस्टर के वैल्यू से। तो दैट्स व्हाई पोर्शन ऑफ द इनपुट, अगर यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लगाओगे, शॉर्ट कर दोगे पूरा, तो क्या होगा, आपका आउटपुट पूरा का पूरा कैंसिल कर देगा, करेक्ट? And that's why your RF becomes zero, your gain becomes zero, and you don't have anything at output. Now आप जब यहाँ पे ओपन सर्किट डाल दोगे तो क्या होगा, your RF become infinity, ठीक है, your gain becomes infinity, पर practically infinity gain possible नहीं है, तो op amp अपने maximum gain पे लौट जाता है, which is around 1 pi. Now this is the example we were trying to solve. Now this is the second part of the example. Now if you want this gain to be increased to 32 dB or 40, how you will calculate the new value of resistor Rin and Rf. तो अपने को पता है गेन का फॉर्मूला क्या है, Rf upon Rin, ठीक है? And now if I know my gain is 40, you can rewrite this formula as Rf equal to gain times Rin. अब दो अननोन है Rin और Rf, तो कभी सॉल्व नहीं हो सकता, तो you have to assume one resistor which is, let's say Rin is 10k. Then you can solve for Rf, which comes out to be 400,000 or 400 kilo ohm. So these are the new values in the gain of 40. तो एग्जाम में इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल से आएंगे कि ओरिजिनल गेन -10 है, नाउ आई हैव टू चेंज इट टू -40, हाउ विल आई डू इट, और if this is the circuit, what is the gain for this circuit, and so on. So this is the first operation, inverting amplifier. Now we come to a second operation, which is a non-inverting amplifier. What is the time now? 48. Okay, I will try to finish this fast if I can. Let's try to see what is the current coming here. Now negative terminal is grounded. Remember, the configuration is not you connect, this is not correct if you connect it to a positive terminal like this and apply an input, correct? Because this will become a positive feedback. तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, आपका इनपुट ऑलरेडी हाई है, उसमें आप उसी का एक हाई वाला पोर्शन ऐड करोगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और जिसकी वजह से आउटपुट चला जाएगा सैचुरेशन. So never put your feedback resistance onto your positive terminal. Remember this thing very carefully. I know this could be bouncer for many of you. You can re-listen to this lecture, and if you want any further clarification, you can ask it out in the beginning of the next lecture also, once you re-watch the entire lecture. So remember, your feedback always goes to a negative terminal, and that's why it was drawn in a reverse way, so that you remember RF, R2, और आपका इनपुट जो है वो पॉजिटिव हो गया है, एंड दैट्स व्हाई द नेम नॉन इन्वर्टिंग. इन्वर्टिंग में इफ यू रिमेंबर क्लियरली, आपका जो इनपुट था वो जाता है नेगेटिव टर्मिनल, यहीं पे आपका इनपुट जाता है, which is actually going to negative terminal, and then there is a second resistor, and this is the positive terminal. Okay, so नॉन इन्वर्टिंग में आपका इनपुट जाता है पॉजिटिव टर्मिनल. Now, the typical gain for this particular op amp is R2 upon R1 plus R2 into V out, or if you revert it, so V1 and V out, actual gain is V out upon V in. So then it should be, this is a voltage division law applied here, V out, V in, this is ground. So V1 is same as your V in, correct? So it is R2 upon R2 plus Rf into V out. Okay, and if you now rewrite, it becomes R2 plus Rf upon R2 is your V out to V in ratio, and that is your gain. अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो you will get 1 plus Rf upon R2, and that is your actual gain of a non-inverting op amp. आपको ये समझ में आया V in यहाँ क्यों आया इस पॉइंट पे वोल्टेज, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड, op amp के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ अगर आपने V in दिया है तो यहाँ भी V in ही होगा, और इसका और एक डेरिवेशन गेन का क्या है, V out upon V out into R2 upon Rf plus R2, that is also this point voltage. So you equate both equations and then you
this term. So 1 plus Rf by R2. Now we will see the first operation next time I guess op amp आ जाएगा क्योंकि आज के लेक्चर में ज़्यादा हो जाएगा पर आपको एक सिंपल सवाल मैं पूछता हूँ you try to solve it on your own by the time I take your attendance. If my RF value is 10k, okay, so let me just paint in the here. Okay. Let's say if I have a circuit like this, negative, positive, ground, V. Okay. If I have this 10k RF value and Rin value is 3k, and then it is now connected to a op amp, which is a positive feedback op amp, again with RF value of 10k and RT value of 3k. Okay. And now this is positive, this is negative. What is the total gain of this circuit? Okay. इस सर्किट के गेन का फॉर्मूला क्या है? माइनस आर एफ अपॉन R1. इसका गेन होगा और वो सिग्नल यहाँ आ रहा है तो ओवरऑल गेन इसका क्या है फॉर्मूला? 1 प्लस आर एफ अपॉन R2 कहेंगे चलो तो इंटू 1 प्लस आर एफ अपॉन R2. ठीक है. तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो वो ज्यादा मार्क्स के लिए होगा, मे बी 10 मार्क्स और 5 मार्क्स. पर सिंपल ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका गेन निकालो तो वो सिर्फ 2 मार्क या 1 मार्क के लिए होगा. सो नाउ you just have to substitute the values. First you calculate the gain for this part and then whatever gain you got, so this is what we call gain connected in series gets multiplied. तो इसका गेन जो होगा वो नेगेटिव होगा, उसके बाद इसका गेन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो योर फाइनल आउटपुट गेन शुड बी नेगेटिव क्योंकि you are multiplying a negative term with a positive term. Negative into positive becomes negative. Okay, so I will stop recording now, and if you have any questions, you can ask me.